International Film Festival for Children and Youth. So, a Smile Foundation is directly impacting the lives of over 300,000 children and their families every year through the 158 rural villages and slums across 25 states of the country. Says real work brings about real change. And in that model, now I would request Tigmanshu sir and Nagesh sir to share their experience with this festival, and as they have come to support this initiative. We are very much thankful to them. I would request them to say a few words. We will be going to Delhi for the inauguration. But the thing is that why a festival? Why are so many festivals happening in our country? We must look into that. I think it's a very, very, very good initiative because today when we watch films, we or students or film buffs, any intellectuals interested in good cinema, we watch films in isolation today. Each and every film is available on the net. You go on the net, you watch the film, and then you forget it. What happens in festival, it becomes an interactive kind of a session. You watch a film, you discuss it with friends. There's a seminar like this happening where you can question the director why he's made this film, what was the motive behind it, how great a reach this film is going to have. Cinema is not like writing poetry or doing a painting behind closed doors. When you make a film, there are 150, 200 people involved in making films. So when it comes out, it has to be consumed like with a lot of people. You need to talk about it. As it is, our society has become so much alienated. There's so much alienation in our society. We don't talk. We don't talk to each other. We have virtual friends on the phone and on your Facebook, your likes and dislikes. But face to face, we aren't interacting. Film festival gives you this chance to interact. One human being will interact with another. When I was a kid studying in Allahabad, we had a small film club in the university. And we used to get 16mm films from the Pune archives. And we used to watch it. I was young, I couldn't understand Truffaut, Bergman, Godard, nothing. But I felt that I'm watching something important. And then we used to ask our senior, what is the film about? And that experience of going to this film club made me, and today I'm sitting in front of you. Just imagine what kind of influence this film festival will have on so many kids from across the world. Smile Foundation initiative is clean, it's innocent, and backed with cinema, because cinema is the greatest art, living art today. It is beyond music, it is beyond architecture, it is beyond painting. It has the greatest reach. And children they are people who are not conditioned. We are conditioned, you and me, because we have been told what is right and what is wrong. किससे कैसी बात करनी है, सही कदम कब उठाना है, माँ बाप, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, आपके सीनियर्स हमको कंडीशन कर देते हैं ना जिंदगी में, सही बात बोलना है. बच्चे, जानवर, बूढ़े लोग, ये लोग कंडीशनिंग के बाहर होते हैं. तो बच्चों को उसी वक्त, उतनी छोटी उम्र में अगर बताया जाए कि अच्छा सिनेमा क्या है, उनके अंदर वो वैल्यूज डाले जाएं, तो शायद हमारा हिंदुस्तान का सिनेमा या दुनिया का सिनेमा और बेहतर होगा. स्माइल फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है, मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ है. थैंक यू. Good afternoon. When Jitendra first approached me with the idea about a film festival, the immediate response was an overwhelming yes, for the simple reason that, just like Tigmanshu stated, film festivals are great opportunities for very, very strong cultural exchanges. As we grow older, we get really cynical, and I remember film festivals when I was growing up. I always used to roll my eyes thinking that it was just for the intellectuals, and one never got an opportunity to experience what was considered popular cinema. These days, film festivals they've
learn to encompass a wide variety of films. And I think what is very critical, and I really hope that the Smile Foundation is able to carry that out starting from the very first edition, is there is no greater way to expose kids to experiences of children all across different countries than through a film festival. I got the opportunity to experience that firsthand in Berlin this year when my film Dhanak went there. They actually shut schools down during the Berlin Film Festival, and they encourage all the children by writing letters to the principals and the trustees of the schools. They encourage all these children to come and watch films from different parts of the world, because that really opens their mind's eye. This is not just to make great cinema, but also to understand issues related to kids all around the world. And I think using using a format like this for this festival will also carry a lot of weight. I think it's something that could prove to be very effective. How many films do you have in this edition, Jitin? 80. Wow. And are you following the format of bringing kids also? Yeah. Okay. Wonderful. So all the ideas I just stated as my own experiences are moot because they're already doing it. But seriously, jokes apart, I think it's a wonderful way to disseminate both information and culture. Film festivals are, and I hope they continue this in a really robust fashion and not lose steam after the first couple of years, which is very, very critical, and it's very standard in our country. We always start things off with a bang and then things slowly go by the wayside. So I'm really rooting for this festival to take off well and actually stay afloat for many more years to come. Thanks. हाँ नागेश जी, बच्चों के लिए फिल्म जो है बॉलीवुड में बहुत कम बनाई जाती है. आपने इकबाल जैसी फिल्म बनाई हुई है. कितनी अहमियत है इस तरह की फिल्में बनाने की, कितनी ज़रूरत है मतलब? वैसे तो ज़रूरत तो है ही, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि फिल्म्स जो है एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो उसमें काफ़ी बिजनेस जुड़ा हुआ रहता है. अगर हम डिज्नी का फॉर्मेट फॉलो करें and we genuinely start making kids for films, I think we can see the business side of things also. Problem ये है कि जब भी हम इंडिया में चिल्ड्रंस फिल्म के बारे में बात करते हैं तो the first thing that comes to mind is a very dumbed down, pardon my saying that, very stupid film जो बच्चों के लिए you know, it's stuff like that. अगर वो अप्रोच हम चेंज कर लें, intelligent children's films can be made. If you look at a lot of animated films made abroad, as an adult you can enjoy it, as a child they can enjoy it. I mean, these are very intelligent films. अगर हम इसको बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के नज़रिए से देखें, आई थिंक you'll see a lot more people making children's films. ज़रूरत तो है, मगर कितने लोग ये फिल्म बनाएंगे, you know, I can't say for sure. अब धनक रिलीज़ पे आ रही है and we're having such an interesting time releasing it. So, you know, it's both helpful and dangerous to be called a children's film. वैसे हमारे यहाँ बच्चों के लिए तो फिल्में बन रही हैं यार. जो फिल्में हम आ रही हैं वो बच्चों के लिए है. Hi. Will you ever be making film on children? Yes, why not? Yes. But as Nagesh said, that today the children are exposed to Disney, as he said, Disney. They are all very expensive films. Toy Story or Cinderella, Alice in Wonderland. These are very, very expensive films. So, if a producer or a studio agrees to shell out that kind of money to make a children film, I will. Why not? ये जो दिक्कत है ये पूरी सिनेमा की है, सिर्फ बच्चों के लिए. हमारे देश में पहले भी कहाँ बच्चों की फिल्में बनती थी, बट एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी थी
जो कि फिल्में बनाती थी, तो मुझे याद है कि पहले थिएटर्स में वो फिल्में रिलीज़ होती थी मॉर्निंग शोज में। मैंने बहुत देखी है, मैं भी एक बच्चों के पिक्चर में मैंने एक्टिंग की है। तो ख्वाजा में तब बस अब्बास साहब ने डायरेक्ट की थी, भारत दर्शन उस पिक्चर का नाम था। तो तब बनती थी और हम लोग जाते थे, तब ब्लैक एंड व्हाइट लॉरेल हार्डी और टार्जन ये भी आती थी, हमने थिएटर में देखते थे वो फिल्में। अब वो ज़माना बदल गया है। आजकल के बच्चों के लिए अब आप इस तरह का हैवी विजुअल इफेक्ट्स वाली फिल्में देख रहे हैं, वो कहाँ जो छोटे सस्ते बच्चों की फिल्म यानी कि कम बजट, वो बच्चे नहीं आएंगे देखने। और वो बच्चे जो एक्चुअली में वो फिल्में देखना चाहते हैं, जो देख सकते हैं, उनके लिए टिकट बहुत महंगे हैं हमारे। जिस देश में 90% जनता 10,000 रुपए से कम महीने में कमा रही हो, 250 रुपए का 300 रुपए का टिकट कौन देखेगा यार? तो ये समस्या सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टोटल सिनेमा की को लेकर ही है, एग्जीबिशन को लेकर, ऑडियंस को लेकर। No, I think Tigmanshu said it perfectly. हमेशा इकोनॉमिक्स की बात होती है। अगर बिजनेस पोटेंशियल लोग देखेंगे कि चिल्ड्रंस फिल्म में है, अगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा चिल्ड्रंस फिल्म्स बनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि राइट नाउ वी आर ऑल फाइटिंग द सेम बैटल। एक मैं बताऊं, जो आर्ट एंड कल्चर जो जिस तरह से पनपता है, अगर आप इतिहास हिस्टोरिकली देखें तो राजा महाराजाओं, तानसेन अकबर के टाइम में थे, करेक्ट? राजा महाराजा पैसे देते थे वो पोएट्स को, म्यूजिशियंस को पेट्रोनाइज करते थे। हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। और अब तो खैर आज की जो सरकार है, उनके लिए आर्ट एंड कल्चर का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो उसकी जरूरत ही नहीं समझते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम्स हैं। अब देखते हैं हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या होगा हमारा। सर, बच्चों की फिल्मों का मतलब समझा जाता है कि केवल एनिमेशन फिल्में बच्चों को मनोरंजन दे सकती हैं और वो महंगी भी होती हैं, जबकि आजकल ऐसी फीचर फिल्में काफ़ी आई हैं रियल स्टोरी बेस्ड जो बच्चों के लिए हैं। जैसे एक मराठी अवार्ड विनिंग फिल्म किला थी। तो इस तरह की फिल्में हिंदी में और मतलब बनाना, और मतलब दूसरी भाषा में बनाना अच्छा है, या एनिमेशन फिल्में महंगी बनाना जिसमें रिस्क भी रहता है वो अच्छा होगा? नहीं, वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट्स द एनिमेशन फिल्म्स, वी आर जस्ट सेइंग दैट अ लॉट ऑफ दीज फिल्म्स जो बच्चों का बेस लाइन बन चुका है, दैट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किला जैसे फिल्म आपने बात की, अगर 3-4 फिल्में ऐसे बनती है साल में और वो बॉक्स ऑफिस पे 10 लाख कुछ कमाती है, यू विल सी दैट नो वन विल मेक दीज फिल्म्स। अगर कोई रिस्क लेके बनाना चाहता है तो ये फिल्में बनती हैं। द होल सर्कल इज कंप्लीटेड व्हेन यू एक्चुअली सी अ बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल। वरना ये फिल्में हम बनाएंगे, फिल्म फेस्टिवल्स को ले जाएंगे, लोग वाह वाह करेंगे और ये फिर दे डोंट गेट अ थिएट्रिकल रिलीज। सो दैट वो सर्कल कहीं कंप्लीट करना होगा। ही मेंशन्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले NFDC होता था, दे यूज्ड टू मेक फिल्म्स विदाउट द फियर ऑफ व्हाट वुड हैपन एट द बॉक्स ऑफिस, और फिर भी ये फिल्म्स रिलीज होती थी। इट्स नॉट दैट दे वर जस्ट मेड एंड नॉट शोन। नाउ दैट हैज डिसअपीयर्ड। सो we all have to go to the same multiplex where Shah Rukh will be playing with his next feature, and 300 rupees for a ticket is impossible. बच्चों तक पहुंचने के लिए एनिमेशन फिल्में जरूरी हैं या रियल स्टोरी बेस्ड फिल्में जरूरी हैं? रियल फिल्म्स, अगर आप एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में देखेंगे, चिल्ड्रंस सेक्शन में 1 एनिमेशन फीचर होगा, बाकी सब लाइव एक्शन फिल्म्स होंगे। या आई एम नॉट इवन टॉकिंग एनिमेशन फिल्म्स एट ऑल, लाइव एक्शन की ही बात कर रहा हूँ मैं। Nowadays you take like to make films for children, you can take base of a film star, biggest film star, like for example Tare Zameen Par, Bhootnath. They collaborate with bigger stars and they make films for children. So can we will cinema see something like that in future? Every story can't be approached from that point of view, right? I mean, then you're going to make crap. Pardon my saying that, because you can't approach it कि मैं इसमें star ले आऊँगा. You know, you have to write a story for what you believe in, and you have to believe in the story itself. Yes, it's a smart move to do something like that, but not everyone is willing to jump in and help a film out. So, Thank you.
तिग्मांशु सर, जैसे अभी आपने भी बात करी थोड़ी देर पहले के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो अभी रिसेंटली एक ब्लू माउंटेन मूवी को भी आई थिंक अवार्ड मिला है, अभी अप्रैल में नेक्स्ट ईयर रिलीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि स्टोरी मैटर करती है? अगर बच्चों की फिल्म भी बना रहे हैं तो उसमें स्टोरी में अगर दम है तो वो चलेगी, आइदर उसके अंदर बड़े स्टार्स हों या ना हो। हाँ देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस पिक्चर को रिलीज कौन कर रहा है, कितने थिएटर में रिलीज हो रही है। अगर छोटे एक मॉर्निंग शो में रिलीज हो रही है तो बच्चा तो अकेले नहीं जाएगा ना, अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएगा ना, अकेले तो नहीं जाएगा बच्चा देखने। तो पेरेंट्स को एक तो उस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए कि भाई हमको बच्चों को ये फिल्म दिखानी है, तो ब्लू माउंटेन को अवार्ड मिल जाएगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आजकल बच्चों को अच्छी वैल्यूज देने के लिए पेरेंट्स भी तो वैसे होने चाहिए ना, पेरेंट्स तो बदल गए खुद ही, इसलिए नहीं ऐसा नहीं कि बहुत इन्वॉल्व है, वो तो बहुत ज्यादा, बहुत ही एक पैनी नजर रखे हुए इस वक्त कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल मामी में तो एक पूरी चिल्ड्रन सेक्शन थी, सो या बॉम्बे ऑल्सो हैज हैड इट, एंड फर्स्ट एडिशन था इस बार where they had a children's section and it was beautifully curated films. Yeah, so Bombay also has it. I'd like to thank you all for having come over, and sir, thank you.